Raman, if you could take our viewers through exactly what this FIR said. Now, we know that Samiksha took us through it, but take us through exactly what we can expect next in the snooping case. Well, at this point in time, Shivangi, it's difficult to second guess what the central agency is essentially going to do. But having said that, what we can safely assume that, since there have been multiple people who have been named in this particular FIR, you would expect the Central Bureau of Investigation to send out the initial summons and record the statements of those who have been linked to this particular case. Now, the very fact that you have one of the representatives or, a close advisor of the Chief Minister who's been named in this FIR, who's carrying out the vigilance or what they're calling it as snooping, the behest of the Deputy Chief Minister as well as the Chief Minister in this particular case. In all likelihood, you would expect their statement to be recorded to find out what was the mandate in the first place and what are the necessary, permissions that were basically taken, whether at all they had or not. But the FIR was, registered on the basis of a preliminary inquiry that was carried out by the Central Bureau of Investigation, which is what happens in almost all cases of the CBI, that there is a preliminary inquiry that is done, and only if there is some sort of an FIR that is registered, that is just a minute. Only if there is some sort of a requirement in this particular case and there is a scheduled offence, the FIR is essentially registered. Important to point out here is the fact that in this particular case, it turns out that the Deputy Chief Minister has also been named because this feedback unit was exactly reporting to the Deputy Chief Minister. And that is exactly why in this particular case you see Manish Sisodia being reported. Now, in the documents that have been accessed by Republic TV, there is a clear mention of the fact that this was created soon after the Aam Aadmi Party came to power. It turns out that they were not only given sweeping. लगभग 80 लाख मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ पे मौजूद था उस टाइम। अभी तक 2019 से लेके आज तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है। 50 लाख मीट्रिक टन अभी बाकी है। लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल के अंदर 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया, लेकिन अब दिसंबर तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि अगला 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाने का, और हमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक पूरा जो 50 लाख मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा बचा है, उस 50 लाख मीट्रिक टन पूरे कूड़े को हटा दिया जाएगा अगले साल मार्च अप्रैल तक। जो टारगेट था उससे दुगनी स्पीड पे अभी यहाँ पे काम चल रहा है, और अभी मैंने उसका रिव्यू लिया था, और टारगेट इनका था कि डेली 6,500 मीट्रिक टन कूड़ा उठना चाहिए, लेकिन 6,500 की बजाय कल जैसे 9,000 मीट्रिक टन उठा है, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इसको बढ़ा के 12-13 हजार मीट्रिक टन कूड़ा डेली उठना चालू हो जाएगा। तो टारगेट से डबल स्पीड पे काम चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक 30 लाख उठा देंगे और उसके बाद मार्च अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर देंगे। सर, नया जो कूड़ा लगातार आ रहा है यहाँ पे, क्या उसका 2000 उसका अलग से वो एडिशनली उसको डिस्पोज किया जा रहा है, उसका कोने में इंतजाम किया हुआ है। वो इसके ऊपर सोल्यूशन है। जैसे अभी दिल्ली में लगभग 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली बनता है, उसमें से 8100 के करीब का इंतजाम है अभी ऑलरेडी हम लोगों के पास। कहीं वेस्ट टू एनर्जी में जाता है, सेग्रीगेशन होता है, वो सारा मिला के देयर इज अ डेफिसिट ऑफ रफली 2800 मीट्रिक टन एवरी डे। उसके लिए ओखला में 1000 मीट्रिक टन का एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, और लगभग 2000 मीट्रिक टन का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वो कहाँ पे आ रहा है, जो बवाना में आ रहा है, जो कि 2026 तक बनके तैयार हो जाएगा। तो तब तक जो है इसका जो फ्रेश कूड़ा आ रहा है, फ्रेश कूड़े को डेली डिस्पोज करने के लिए हमने टेम्पोररी अरेंजमेंट किया, जैसे 2000 मीट्रिक टन यहीं पे कोने में इंतजाम किया हुआ है। सो जो मैंने बताया, यहाँ पे 10,000 मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट उठता है, और 2000 मीट्रिक टन जो डेली कूड़ा आता है उसको डिस्पोज किया जाता है। All right, viewers, so we're just trying to get a reaction from the Aam Aadmi Party right now. So this is Arvind Kejriwal's briefing just after we saw there's a new FIR which has been launched against Manish Sisodia. That news has come in.
that essentially means it's more trouble for Manish Sisodia, who is already being investigated for Liquorgate. CBI has registered one more case against Sisodia and snooping case this time. Let's move ahead to the other